Well, good morning, students. Students, yesterday we discussed about the second function of the Constitution, and the function is that it's the duty of Constitution to specify who has the power to make decision in a society. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है जिसने ये स्पेसिफाई किया है, बिल्कुल बताया है कि सोसाइटी में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. Now, the one more function is there of the constitution, that it puts the limits on the powers of government. If constitution will not be there, surely, certainly, government will use unlimited power, and none will be there or none is there who can put limit on the functions of the government. So it is only constitution who has put limitations on the powers of the government. But this is clearly not enough. Suppose you decided who had the authority to make decision, but then this authority passed law that you thought were patently unfair. अब हमने डिसाइड कर लिया कि एक अथॉरिटी होगी जो कि डिसीजन लेगी, लेकिन ये अथॉरिटी ऐसे भी डिसीजन ले सकती है जो अनफेयर होंगे. इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टाइजिंग योर रिलीजन, फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई ऐसा नियम लागू हो गया जिससे हम अपना धर्म को एंजॉय नहीं कर सकते, उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, और इट enjoined that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs, or that people who belonged to a particular group would always have to serve others and would not be allowed to retain any property. There may be, it must be, or that government could arbitrarily arrest someone, मीन्स बिना किसी रीज़न के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना कोर्ट की परमिशन के किसी को भी अरेस्ट कर सके, और दैट ओनली पीपल ऑफ वन सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. Now you would obviously think these laws were unjust and unfair. Of course, we all will think that these laws are not good for us. They are just unjust, means they are not fair for us. And even though they were passed by a government that had come into existence based on certain procedures, और चाहे वो किसी गवर्नमेंट ने ही बनाए और वो गवर्नमेंट जिसको हमने प्रोसीजर कंप्लीट प्रोसीजर लगा के बनाया था, दैट वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट दैट गवर्नमेंट इनेक्टिंग दीज लॉज. So, what is the third function of constitution? The third function of constitution is to set some limits on what a government can impose on the citizens, कि गवर्नमेंट कितने लेवल तक चीज़ों को इम्पोज कर सकती है. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास दीज. और ये लिमिट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लगाई गई हैं, और गवर्नमेंट इनको कभी भी ट्रेसपास नहीं कर सकती, ओवर नहीं कर सकती. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज. The most common way of limiting the powers of government is to specify, पहले तो ये देखना है, certain fundamental rights that all of us possess as citizen. कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हम सबको बराबर मिले हुए हैं सिटीजन्स के हिसाब से, एंड विच नो गवर्नमेंट कैन बी अलाउड टू वायलेट. The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. ये तो हो सकता है हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट्स दिए गए हैं इनका कंटेंट, इनका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स, and citizens will be protected from being arrested, for example arbitrarily and for no reason, कि किसी भी आदमी को ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बिना किसी कारण के. दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. Citizens will normally have the right to some basic liberties. Citizens को कुछ basic liberties मिली है, आज़ादी मिली है. First of all, to freedom of speech, then freedom of conscience, then freedom of association, freedom to conduct a trade or business, etc. These are some of the fundamental rights which have been given by the Constitution to the citizen of a country. And in practice, these rights can be limited during times of national emergency,
जब हमारे ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े या कोई ऐसे हो, तब तो इन पे लिमिट हो सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसिस, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन उन सर्कमस्टांसिस को स्पेसिफाई करेगा अंडर विच दीज राइट्स में बी विड्रॉन. Now, what are the aspirations and goals of a society? Let us move further. Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. But many 20th century constitution, of which the Indian constitution is the फाइनेस्ट एग्जाम्पल, पहले जो भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए थे, उन्होंने ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट को दे रखी थी और कुछ लिमिट्स गवर्नमेंट के ऊपर लगा रखी थी. लेकिन जो 20वीं शताब्दी में जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बने और जिसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे देश का है भारतीय संविधान, also provides an enabling framework for the government to do certain positive things, to express the aspirations and goals of society. The Indian constitution was particularly innovative in this respect. Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limit on the powers of government, but they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. आई मीन टू से कि गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट तो लगा रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कोई भी भेदभाव ना किया जाए इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को पावर भी दी है कि अगर किस समाज में कोई भी इस तरह के अनइक्वलिटी को प्रमोट करता है तो उसके लिए पॉजिटिव मेजर्स लिए जाएं कि इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए. सो दीज आर साइड बाय साइड some limits as well as some powers have been given. For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. कि इंडिया में ये इच्छा है कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो. एंड इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स. तो अगर हमारे सोसाइटी की ये इच्छा है तो इसके लिए गवर्नमेंट को हमने पावर दी है कि वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स लें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination more positively. कि कोई भी ऐसे स्टेप ले साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए. नाउ मोर पॉजिटिवली, अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी and the framers of the Indian Constitution. For example, एक एग्जाम्पल अब हमने लिया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का. थॉट that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. So the Indian Constitution enable the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. As we go on studying, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of preamble to our Constitution. And these provisions are found in the section on fundamental rights. सारे provisions जो गवर्नमेंट को दिए गए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, वो हमारा मेन सपोर्ट है हमारे प्रियम्बल के लिए. और कॉन्स्टिट्यूशन का में जहाँ पर जो सेक्शन फंडामेंटल राइट्स के लिए बनाया गया उसमें ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी also enjoy government to fulfill certain aspirations of the people. Now let us come to the fourth function of the Constitution, and this is to enable the government to fulfill the aspirations of the society and create condition for a just society. Now, what are the enabling provisions of the Constitution? Let us discuss. Constitutions are not only rules and regulations controlling the powers of the government, but they also give powers to the government for pursuing collective good for the society.
कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट को पावर भी देते हैं जिससे पूरे समाज के कलेक्टिव गुड के लिए काम किया जाए। Constitution of South Africa assigns many responsibilities to the government. It wants the government to take measures to promote the conservation of nature, make efforts to protect persons or groups subject to unfair government, must progressively ensure adequate housing to all and health care, etc. In the case of Indonesia also, the government is enjoined to establish and conduct a national education system. The Indonesian constitution ensures that the poor and destitute children will be looked after by the government. As some special provisions have been given by the Constitution of South Africa and Indonesia to its government, that they are to make these type of provisions for the well-being of the society. In the same way, the fundamental identity of a people. Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of people, and this means the people as a collective entity came into being only through the basic constitution, and it is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one forms a collective identity. One has many sets of identity that exist prior to a constitution. अब जैसे for example, I am a Hindu, I live in Haryana, I belong to Haryana, then I belong to India. So I may be having several identities, but by agreeing to certain basic norms and principles, one constitute one basic political identity. तो लेकिन संविधान के हिसाब से हर आदमी की एक ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी. एंड सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग framework within which one pursues individual aspirations, goals, and freedom. So the Constitution sets authoritative constraints upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we may not trespass. कि ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किए हैं कि जिसको हम ट्रेसपास नहीं कर सकते. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मोरल आइडेंटिटी. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक पहचान दी है. थर्ड एंड फाइनली, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. If one looks at constitution, अगर हम अपने संविधान को देखते हैं around the world, they differ in many respects. In the form of government, they enjoin in many procedural details, but they also share a good deal. As most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respect. Most claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way they embody conceptions of natural identity. Most nations are an amalgamation of complex set. Amalgamation means a group of complex set of historical traditions. एक्चुअली बहुत सारे हमारे नेशंस, हमारे देश बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से निकल के आए हैं. दे वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप्स, और वहाँ पर इसीलिए बहुत अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं that reside within the nation of different ways. For example, German identity was constituted by being ethnically German. कि जर्मन की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको किस बेस पर बनाया गया है कि उनको सबको एथनिकली जर्मन कहा जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी, और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने यही पहचान दी है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन on the other hand does not make ethnic identity. वहाँ जबकि भारतीय संविधान ने किसी एथनिक ग्रुप के हिसाब से पहचान नहीं बनाई है. A criteria for citizenship, but different nations embody different conceptions of what the relationship
लेकिन डिफरेंट नेशंस ने अपने लोगों के बीच में रिलेशनशिप को बनाने के लिए बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन and the certain central government should be, and this relationship constitute the national identity of a country. Now let us see what is this is a cartoon, and here some people belongs to Shias, some people belong to Sunnis, and they are of different ethnic groups. And the writing of the new, this is Iraqi constitution, it belongs to Iraq after the collapse of Saddam Hussein, when after the death of after the means Saddam Hussein resigned, saw a lot of conflict between different ethnic groups in the country. What do these different people stand for? ये सब अपनी पहचान के लिए खड़े हैं. Compare the conflict depicted here with that depicted in earlier cartoons from the European Union and India. Now, because Iraqi constitution gave, under the leadership of Saddam Hussein, gave the citizenship on the basis of ethnic group. But after the death of Saddam Hussein, different ethnic groups, they started raising objection that their ethnic group should be given priority. And that is why there was always a situation of tensions. Now let us just in this way we have come to know that the Indian constitution is one of the best constitution of the world, because it does not give superiority to any ethnic group. All the people of different ethnic groups, they have been treated or they are being treated equal. No religion has been given priority. No language has been given priority. All the languages are alike. All the religions are alike. Even government cannot interfere in the matter of religion or language. But if there is any dispute on the matter of or on religious matter or on linguistic matter, certainly government will interfere. So these rights have been given to the people on the basis of constitution. So this is all for the day. Thank you and have a nice day.